Now we are going to discuss vector A equal to 2 I cap minus 2 j cap plus k cap and vector B equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. We have to calculate vector A plus vector B, vector A minus vector B, vector A dot vector B, mod of vector A, mod of vector B, angle between vector A and vector B, A cross vector B, and calculate C cap such that vector C is perpendicular to vector A and vector B. यानी कि यूनिट वेक्टर ऐसा निकालना है जो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के परपेंडिकुलर हो. लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. वेक्टर A इक्वल टू 2 I कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप. वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू 2 I कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप प्लस I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप. इसको सिंपल आप अलजेब्रा में जैसे आप एडिशन करते हैं आप वैसे ही करेंगे. I को I के साथ ऐड करेंगे, J के J के साथ और K का K के साथ. राइट. तो 2 I कैप प्लस I कैप 3 I कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 j कैप. This will be plus 0 j cap. This is plus k cap plus 3 k cap. This will 4 k cap. That is 3 I cap plus 4. Now second one is vector A minus vector B. This is 2 I cap minus 2 j cap plus k cap minus times I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. This will be 2 I cap minus 2 j cap plus k cap minus times I cap minus times 2 j cap minus times 3 k cap. Now 2 I cap minus I cap plus minus 2 j cap minus 2 j cap plus k cap minus 3 k cap. 2 I cap minus I cap plus minus 2 j cap minus 2 j cap minus 4 j cap and this will be minus 2 k cap. That is I cap minus 4 j cap minus 2 k cap. ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B. वेक्टर A डॉट वेक्टर B दैट इज 2 I कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप डॉट I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप. Now in this what we do? Multiply coefficient of I plus coefficient of j plus coefficient of k. बट याद रखना वेक्टर A डॉट B में यहां डॉट लगाएंगे एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ A डॉट वैल्यू ऑफ B. यहां पे डॉट लगाना है. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट यूजिंग ए डॉट हियर. डॉट नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा आपको. तो क्या करेंगे आप? जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ I 2 into 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ J minus 2 into plus 2 minus 2 into plus 2 plus coefficient of K 1 into 3. This will be 2 minus 4 plus 3. This will be 5 minus 4, that is 1. Right? Now net fourth one is
magnitude of vector A. Vector A is how much? 2i cap minus 2j cap plus magnitude of vector A equal to under root of square of coefficient of I, 2 square, plus square of coefficient of j, minus 2 square, plus square of coefficient of k, 1 square. This is 4 plus 4 plus 1. This is under root 9 equal to 3. Now we have to calculate mod of vector B. Now mod of vector B equal to under root of square of coefficient of I, 1 का square, plus square of coefficient of j, 2 का square, plus square of coefficient of k, 3 का square. This will be 1 plus 4 plus 9. 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. That is 10 plus 4, 14. This is the, ठीक है. Now angle between vector A and vector B. Now A dot B equal to A B cos theta. Now cos theta equal to vector A dot vector B divided by AB. Now A dot B कितना निकाला है हमने? It is 1. Mod of vector A we have calculated as a 3. Mod of vector A, this is what? A dot B divided by mod of vector A, mod of vector B. A dot B तो 1 निकाला है. mod of vector A कितना निकाला है हमने? 3. mod of vector B अभी निकाला है under root 14. That is 1 upon 3 under root 14. This is cos theta, and cos theta equal to 1 by under root. तो theta equal to cos inverse 1 upon 3 under root 14. A cross B, right? तो A cross B equal to, here simply I am going to write I cap, J cap, K cap, first term plus, minus and plus. This is 2 minus 2 and 1, 1 plus 2 and plus 3, right? पहले आई जे के लिखा, फिर ए के लिए सारे एलिमेंट लिख दिए, बी के सारे एलिमेंट लिख दिए. ठीक है, आई रखा मैंने यहाँ पे. जब मैं आई को लूंगा देन व्हाट आई विल डू, ये कॉलम, ये रो, फ्रिज, 3 into minus 2 minus 6, and this will be how much? Minus times this and this, minus 2 cap minus j cap. इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो. What you will get? 2 into 3, 6. Minus times this one, minus 1. Plus k times. Leave this column and row. What you will get? 4 minus times minus minus plus 2. 4 minus times this one. This will be minus 8 I cap minus 5 j cap plus 6 k cap. This is A cross B. Remember that when you are going to calculate B
cross A, it will be 8 I cap plus 5 J cap and minus C 6 K cap, इतना आएगा अगर आप B क्रॉस A निकालते हो. अभी क्या निकाला है? A क्रॉस B. ठीक है, that is A cross B will be minus times B cross A. You can prove it. ठीक. Now A cross B equal to minus 8 I cap minus 5 J cap plus 6 K cap. Let assume that this vector is vector C. तो vector C is perpendicular to vector A and vector C is perpendicular to vector B. That is, vector C is perpendicular to plane containing vector A and vector B. That is, vector C equal to minus 8 I cap minus 5 J cap plus 6 K cap. ठीक है. Now C cap equal to vector C divided by mod of vector C. Now mod of vector C equal to how much? Square of coefficient of I, that is 64, plus square of coefficient of J 25, plus square of coefficient of K, that is 36. What we will get? ठीक है, ठीक है. This will be 125. That is C cap equal to minus 8 I cap minus 5 J cap plus 6 K cap divided by under root 125. Sorry, this is C cap, right? तो C cap equal to minus 8 I cap minus 5 J cap plus 6 K cap divided by 1 under root 1 upon 25. What is C cap? C cap is the vector perpendicular to the vector A and vector B. Right? So C cap is what? Vector A cross vector B. And what is mod C? That is mod of vector A. Clear? ठीक है भाई. क्या था? A cross B. I have taken it as a vector C. So if I am writing C cap equal to vector C divided by mod of C, तो vector C की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? mod ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. ठीक ना.